very good morning to one and all. Honorable Chancellor Shri Ankush Rao Kadam, Honorable VC Professor Vilas Sapkar, all the eminent speakers including Professor Bhimrai Maitri and other speakers also. I am highly delighted to be a part of this conference. And you will be happy to know there are two reasons. The first reason is I am very much blessed with the people belonging to Maharashtra, including Professor Bhimrai Maitri and all, because I born and brought up in Maharashtra. The second reason is I got an opportunity to work with your Vice Chancellor and my former Vice Chancellor, Dr. Vilas Sapkar. And keeping in mind, these two reasons are very important for me because I am enough fortunate to have the blessings of all, and therefore I am able to do the things in the field of education. Friends, as this conference is focused on leadership, because the theme is Be the Change. At the beginning, the MGM has given us one small activity related to ENSO. And they proved that what thought Mahatma Gandhi had and what is the philosophy of Mahatma Gandhi, earn while learn and learn while earn. ENSO depicts that ENSO is the revelation of a world of the spirit without beginning and end. And even all of us have drawn one picture, and I found there is no end at all in all that creation made by all of us. Likewise, in the human community or in the community itself, we could see that if we decide that this particular phenomena will end, but it is not like that, and the life is like the same. Because when we are getting involved in the process of education, we have to understand that the journey is very important. When we are playing the role of leader in the institutes, we have to make sure that whatever the transformations, whatever the changes, as desirable by the society, we have to give some results to the society. Of course, the entire conference is moving around the planning and strategies, and they know very well I am in the institute which is confined to planning and administration, and therefore they may have this thought in their mind and they have invited me. We know that since we are getting involved in the process of education, we should know this leadership is very important. We should be able to point out the difference between leaders and leadership. And all of us are well acquainted with the process of leading the institute, so I think there is no need to give much focus to this concept. Need for trained and experienced institutional leaders is also outlined in the National Education Policy. And we state that the policy itself says that leaders will cultivate excellence and innovation. And I am very happy because this conference was inaugurated by doing that particular activity. Means definitely the leaders who have shaped this MGM is very unique, and the basic idea behind this MGM University is wonderful. We got to know that they have cultivated the culture of excellence and innovation. Sir, I am very happy to see and to witness the entire phenomenon under the leadership of our respected Professor Vilas Sapkar. Outstanding leaders will identified and trained through ladder of leadership is very important, and the policy is having that focus. The time is very short, so I will
take it very fast. When we give the example of all these processes which are aligned to NEP 2020. Now this picture or this particular slide is confined to policy, curriculum framework, syllabus and learning teaching material, then transformation at the school, capacity building, all these processes, they are undertaking it. And see, when we are talking about, because joining the dots, Dr. Sapkar has elaborately explained the process from school to higher education. We cannot isolate ourselves from the school because school is the beginning. And we have to ensure that we are the leaders. First thing which is required to understand and to take the institutes at the extra miles, first we have to understand the meaning of education. What it means. It manifests the mind. It liberates the mind. It liberates the soul, exercising all the faculties to the fullest extent. Then education is the manifestation of divine perfection which is already found in man. But there is one concept, or rather we can say that definition given by Rabindranath Tagore, because it has correlation with the leadership role. According to Rabindranath Tagore, what is the definition of education? According to him, education means enabling the mind to find out ultimate truth. We are striving hard to find out that truth. Ultimately, it's a value. But it is very important because doing justice to the education, doing justice to our role as a leader, it is very important to understand the meaning of education. बहुत बार ऐसा होता है कि हम we are leading the institutes, but we do not know where to start and where to go, where to end. So it is very important to understand and assimilate the concept of education. Then come to the NEP. You know very well, because the journey with destination. Here we have drawn that picture, or some creativity was there in ENSO. No beginning, no end. But here, the destination is fixed because we have to envision Bharat, India, at 2047. We all of us aspire to be a human being, to be a very democratic person of developed nation. Vikasit Bharat या प्रगतिशील भारत के हम लोग नागरिक होने जा रहे हैं, तो then we have to align all these things with that particular destination. The aim must be for India to have an education system by 2040 that is second to none, with equitable access to the highest quality education for all learners through all learners regardless of social or economic background. I got to know since morning when I was taking a round of this university and I was accompanied by your registrar. So I got to know that how MGM is working. And it is very wonderful because they are very inclusive and they are promoting the students who belong to the different social groups. Then very important, education policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. Again, when we consider that I am a leader, you are a leader, we have to utilize the last potential of the students. And they are utilizing it. They are giving direction to the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities, but beyond that, foundational capacities of literacy and numeracy and the higher order cognitive capacities such as critical thinking and problem solving, etc., etc. It is very important because sir has already highlighted that point from school to higher education. So this upward direction flow, we have to understand if the foundation is good, it is based on the values, the system is fully vibrant, then it is possible to take that educational institute to a greater height. Then the rich heritage of ancient India is also important because
we have to feel that. We must have that pride. We should feel that we are Indians, we are Bharatiya. And then the pursuit of knowledge, Gyan, Pragya and truth, very important. We have to blend all these three things together, because everywhere we require to have wisdom. Only having certificates and degrees will not serve the purpose to be a developed nation, but beyond that, we should have wisdom. Knowledge plus wisdom and truth, the most important value in inculcating the culture of excellence. Then the aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self. Very important. Now, what we could notice, though we are having n number of degrees, but person is not having that wisdom, is not having that value, and because of that, suddenly he get collapsed. So it is very important to keep in mind that the vision of Vikasit Bharat is that of a prosperous nation, but at the same time, it speaks about the harmony. Even that ENSO symbolizes the spirit of togetherness, spirit of harmony. And I think you will understand the what is the focus of this entire conference. Then a very important slide, because in the gathering, there are eminent leaders and teachers as well are sitting before me. So it's not the job of only leaders, because when we speak about the leadership, then it involves the leader plus the stakeholders. It includes parents, students, then activists, then the persons who is doing something for society. All stakeholders together, the leader will be able to give justice to his role, and therefore it is very important. Teachers are playing very crucial role in implementing the things which is given or which is assigned by his or her leader. And teacher has to understand that he is at the center. He will be the change agent to bring the transformation in the institutes. And therefore, we have to think, leader has to think, he has to re-establish the image of teacher. Only the job of leader is, of course, leading the institutes in a right direction, but it will not serve the purpose of becoming a developed country or becoming an excellent institute. He has to consider the role of his subordinates. Teacher is one of them. And good leaders, what we could see, बहुत अच्छे जो नेतृत्वधारी लोग हैं, वो always what we could see, वो बहुत inclusive होते हैं, सबको लेकर चलते हैं. And because of that only, their leadership gives the remarkable outcome. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisioned by our Constitution. Already it is reflected in the Constitution, there is nothing new. The policy envisages that the curriculum and pedagogy, because see, to accomplish the outcome or the vision or to reach to that maximum level, it is very important how we are transforming the change or transforming the institute through what. Then we notice that two things are very important. The one is curriculum, because curriculum is a tool in the hands of artists, and through that tool, he will bring the expected change. And the second is pedagogy, because pedagogy, with the help of pedagogy, we will make them able to understand the things. Otherwise, there is no use of giving so many deliberations before the students. The vision of the policy is to still among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought but also in spirit. Spirit is very important, and I am happy, I am highly delighted because you have started this opening of the conference through ENSO.
because ENSO indicates the same. Sa vidya vimukte. Education means what? Which liberates the soul. And here we have to be very conscious about liberating the souls, and then I can say that, or you can say that, yes, we are in the line of taking Bharat at a greater height. Now my presentation is divided into few slides. The first one is foundational stage and school education in NEP 2020, the paradigm shift. Why I have considered this slide, and it is very important because in the auditorium there are the leaders who are leading their schools. Means this MGM is taking all the schools at a greater height along with higher education. It is not confined to only higher education institutes, and therefore, as I have been told, that the gathering will comprises school leaders and higher education as well. So therefore, these are the few slides. I will take it in a very short while. See, foundation is very important, and you could notice the biggest change, or we can say that this policy, how it differs from the earlier policies, because this foundational stage focus is very important. FLN, foundational literacy and numeracy, was the focus of the policy. So all the stakeholders or the education system is focused on making that foundation which will be very strong. And many of the, Professor C.B. Sharma is with us, so he will take that point in detail in his deliberation. But see, without thinking about the foundational stage, no one can dream, no one can see the dream, no one can think about higher education. Because if you, I hope that you might have gone through the books which are for grade 1 and grade 2. You will see the difference you will differentiate these new books from earlier books, and you will be happy to see that what are the changes have been brought in the books. किताबों को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि इंक्लूसिवनेस इट इज़ नॉट ओनली फॉर गिविंग स्पीच. समावेशकता केवल भाषण के लिए नहीं है, किताबों में आप देखोगे. वर्ल्ड अराउंड अस, केवल हम लोग बात नहीं करेंगे तो इट विल बी हाईलाइटेड, और ऑलरेडी इट हैज़ बीन हाईलाइटेड, ऑलरेडी इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इन द बुक्स. क्लास 1 और क्लास 2 की, ग्रेड 1 ग्रेड 2 की किताब देखोगे तो यू विल बी हैप्पी टू सी इट, हाउ इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इन द बुक्स. देन many things are there. I will highlight that particular slide. Now see, the entire diagram shows that there is, we cannot isolate higher education from school education. Already policy has given structural diagram about 5 plus 3 plus 3 plus 4. We have to understand what is the gimmick behind it. In isolation, we cannot see the foundational stage. 3 साल की बाल वाटिका है plus 2 साल कक्षा 1 कक्षा 2 है. These are the 5 years, very important. Earlier, how it was, that you know very well. And see, this is the structural diagram with a specific focus on early childhood and care education. The NEP 2020 has made its intent clear on strengthening the foundation of learning for seamless and smooth transition across the foundational stage. And you will notice that there is a spiral progression. When I was doing that, and so I had a thought of this spiral progression. It is integrated in a foundational stage. This spiral progression is very important. We have to link all the educational content from foundational stage to higher education. डेंसिटी हमने 8 कक्षा में सीखी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हायर एजुकेशन में उसको कैसे लाएंगे हम लोग. न्यूटन्स लॉ का रिलीवेंस क्या है, स्कूल एजुकेशन में क्या है और आगे भी क्या है. बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग वो समझ नहीं पाते. अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड. When we are teaching something in the class, we have to think about the level of students, then the capacities of the students, and what changes we are bringing in them. It is very important. This is the structure. It is given in the policy.
The powerful role of the teacher in foundational literacy and numeracy is what? Design the appropriate classroom with focus on literacy and numeracy activities, create an emotionally supportive and welcoming classroom, instill a desire among children towards FLN, model literate behavior, use toys to attract children's attention towards FLN, and then identify the red flags, sign of problems. Likewise, there are n number of activities. Those they are having leadership of schools, you please read all these books, you will find that, and you go through National Curriculum Framework for foundational stage. So, you know that this FLN, Foundational Literacy and Numeracy, its focus is on, our highest priority must be to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school and beyond by 2025. Ensuring universal acquisition of FLN in primary classes by 2025 so that every child will achieve the desired LOs, learning outcomes. LOs means learning outcomes by the end of grade 3. Then before entering grade 1, every child will be provided with 3-month school readiness program or 3-month school preparation module. Making children competent in doing meaningful reading, writing and mathematics by the time they enter in class 3. Connect and relate the classroom learning to the outside world. With a specific focus on ECCE, the NEP 20 has made its intent clear on strengthening the foundation of learning for seamless and smooth transition across the foundational stage. It is very important. When we are talking about higher education, we should not forget about foundational literacy or foundational stage. क्या हुआ? Charge गए. हाँ. See, now why I have planned in this particular way? Because we have to understand the integration of IKS component later on. This NCF for foundational stage is focused on the development of early childhood care and education in India and the world, which includes Panchakosh Vikas. Smriti, focus is on Smriti and not on rote learning. Very important. Many of us, they are aware about this Panchakosh Vikas, Panchakoshatmak Vikas, how children learn at the foundational stage, context of schooling, then flow and interconnectivity among aims, curriculum. There is the good connectivity between all these curriculum goals, competencies and learning outcome. And if you are in higher education institutes, again, it is same. Because sometimes we get confused. प्राइमरी पे आ रहा है, फिर हायर एजुकेशन में तो ये करना ही नहीं है, क्लास में पढ़ाना है. और देखिए NAAC का अक्रेडिटेशन आया, इट इज़ आउटकम बेस्ड. प्रोग्राम आउटकम पूछा, कोर्स आउटकम पूछा है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि आउटकम क्या है इसका मतलब. सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन एंड लिटरेसी. अभी लैंग्वेज के बारे में कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं. हम भूल ही गए थे कि हमारा भारत देश इतना संपन्न राष्ट्र है और इसमें इतनी सारी भाषा बोली जाती है. औरंगाबाद में खड़े हैं, औरंगाबाद में मराठी भाषा का उपयोग करते हैं, पर थोड़ा सा दूर जाएंगे तो और डायलेक्ट्स चेंज होगा. ये भाषा का अपने आप का एक इम्पॉर्टेंस है और भारतीय भाषा, इसका इम्पॉर्टेंस, इसका महत्व, इसका सिग्निफिकेंस ये पॉलिसी ने बताया है. वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. 22 भाषा तो मिनिमम है, उसके बाद भी बहुत सारी भाषाएं हैं और अभी पाठ्यक्रम भी बन रहे हैं. देन अप्रोचेस टू टीचिंग मैथमेटिक्स. बेस हमारा जो है वो मैथमेटिक्स का है. अभी सर ने हमें बहुत अच्छे से जॉइनिंग डॉट्स का एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से ग्राफ भी कैसा होता है, उसके रिलेशन क्या है ये बताया. बहुत सारे और वक्ताओं को हमको सुनना है तो आपको सुनने को मिलेगा. हम लोग ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की है पॉलिसी ने, ये देखिए, मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मैथ का बहुत डर था. ऐसा लगता था मैथ अपने को आएगा ही नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी पॉलिसी ने जो पॉलिसी में जो चीज़ हाईलाइट की है, न्यूमरेसी की बात की है, फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड यू विल सी दैट इट इज़ सीमलेसली इंटीग्रेटेड इन द पाठ्यक्रम.
तो बच्चों का विकास होने के लिए हमको नीचे से ही ये सब देखना पड़ेगा, तब हायर एजुकेशन में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। बहुत सारी बातें हो रही थी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, उसमें किस ढंग से हम लोग ये इंटीग्रेट करेंगे, और उसमें मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इकोनॉमिक्स पढ़ो मैथ आवश्यक है, स्टैटिस्टिक पढ़ो मैथ आवश्यक है। तो ये मैथमेटिक्स का जो इंटर रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी पे ज़्यादा एम्फोसिस है। पेडागोजी एक अपने आप में हम लोग बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हो पेडागोजी ये अध्यापन शास्त्र हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। लीडर्स है तो लीडर को डाउन द लाइन उसके जो सबऑर्डिनेटर्स है, या सबऑर्डिनेटर्स बोलना ठीक नहीं है, टीचर्स है, वो टीचर को पेडागोजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे, एक्वेंटेंस उसमें आना चाहिए, उनमें आना चाहिए। क्योंकि पेडागोजी, अभी एक छोटा सा हमने एंसो का प्रयोग किया, क्या है वो, इट इज़ नथिंग बट पेडागोजिकल, ये यानी पेडागोजी बहुत, पेडागोजी को हम लोग डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो पेडागोजी इज़ व्हाट, टू मेक देम अंडरस्टैंड, और उसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजी करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्लाइड बनाएंगे, ये सब चीज़ें उसमें आती है। इट्स नॉट सो साइंटिफिक, और इसलिए टीचर को एक्वेंट करना बहुत आवश्यक है। लर्निंग थ्रू प्ले, ये आज का इनॉग्रल फंक्शन भी उसके साथ हुआ, एक्टिविटी बेस्ड था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेडागोजी में थोड़ा सा मैं हाईलाइट इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए आप पॉलिसी, केवल बड़ी बड़ी बातें पॉलिसी में नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, छोटी छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए आपने इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर प्लानिंग, पंचपदी, a 5-step learning process, differentiated instruction, scaffolding and gradual release of responsibility। बच्चों को हम लोग नीचे से तैयार करेंगे, ऊपर आने के बाद क्लास में बिखरा हुआ सामान है उसको वो ऑर्गेनाइज करके रखना है, स्मॉल एक्टिविटी है बट इट गिव्स लॉट। धीरे धीरे उसमें वो लीडरशिप, नर्चरिंग द फ्यूचर लीडरशिप, मदन मोहन मालवीय मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर ये प्रयोग चल रहे, क्यों चल रहे हैं? Everyone should be a leader। बहुत बार हमें लगता है, थोड़ा सा मैं बड़े इसके साथ बात कर रही हूँ आपके साथ, ये मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है, वो वीसी देखेंगे, रजिस्ट्रार देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, मैं क्यों लाइट बंद करूँ, मैं क्यों स्वच्छता रखूँ? तो ये जो है वी हैव टू नर्चर फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। मुझे तो लगता है सर कि सबका सर को बोल रही हूँ, मुझे लगता है सर कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लीडर जितने इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी के साथ वो अपना रोल कर रहे हैं, उतने ही हमारे फाउंडेशनल स्टेज के लीडर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल हायर इंस्टीट्यूट पे जिम्मेदारी देकर हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते। फाउंडेशनल स्टेज पे यदि हम लोग बच्चों को आदत डालेंगे कि भाई हाउ टू बी अ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड, बड़े आयु में वो भूल ही जाते हैं कि हमें ये इस ढंग से हमें काम करना है। ही शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आज ऊर्जा देखिए, पर्यावरण देखिए, हम लोग कार्बन ऑडिट और इसकी बातें करते, कहाँ से आए ये विषय? तो हम लोग कहीं तो भी नर्चरिंग में भूल गए हैं, ये बहुत आवश्यक है। चिल्ड्रन ब्लॉसम्स व्हेन देयर इज ए positive relationship between teacher, family and community. It is applicable to all, not to only foundational stage. Then children enjoy learning through several ways: talking, listening, using toys, painting and drawing. It is applicable to all, not to only foundational stage children, but it is applicable to higher education institute and their children. 4-block approach, this will take time, but I won't be able to give some deliberation on this. 4-block approach regarding the languages, very important, because to get the knowledge about literature, especially language, is very important because that is related with our भारतीयता। हमको हमारे देश की परंपराएं क्या है, देश क्या है, देश की आज़ादी कैसी प्राप्त हुई, देश में कितने सारे हमारे एम्पावर्ड लोग थे जिन्होंने देश के लिए काम किया है, ये हमें पता चलना चाहिए ना। बच्चों को हिस्ट्री मालूम ही नहीं, महाराष्ट्र में रहते हुए शिवाजी महाराज के लिए मालूम नहीं, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज, संभाजी नगर हुआ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये क्यों आए, इसके पीछे हमारी भूमिका क्या है,
या देश के हित में हमने क्या करना चाहिए, ये बातें बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है। ये इसमें आएगा। लैंग्वेज इज़ द मीडियम। आप बोलोगे कि लैंग्वेज का क्या उपयोग है, भाषा के माध्यम से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एंड लास्ट, क्रिएटिंग क्लासरूम नॉर्म्स विद चिल्ड्रन अराउंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड क्लासरूम बिहेवियर। बहुत शॉर्ट में ये नीचे भी दिया है। द पावरफुल रोल ऑफ द टीचर इन FLN डिज़ाइन द ये हो गई शायद, रिपीट हुई। Principles of pedagogy that you know very well, no need to explain in detail. Then local stories, rhymes, songs, games, craft material are used extensively. Children's home language is welcomed and indeed encouraged in the classroom. बहुत बार इंग्लिश को तो स्वीकार लिया हमने, भारतीय भाषा का क्या? घरों में यदि हमारी मातृभाषा खत्म हो जाएगी तो संस्कार भी उसके साथ लुप्त होंगे, और इसलिए मातृभाषा का उपयोग हमने करना चाहिए। हमारी रीजनल लैंग्वेज, उसका भी उपयोग हमने करना चाहिए। भाषा यदि हम लोग भूल गए तो हम सब कुछ भूलने वाले हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो कहीं ना कहीं आएंगे। पार्ट टू इज रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। इंडिया वॉज होम टू फ्लरिशिंग सेंटर्स ऑफ नॉलेज, नालंदा, तक्षशिला और बाकी सब indigenous forms of education gave way to Western style education. With each invasion came destruction, convergence and increased hybridity within the Indian subcontinent. The first Indian universities established by the British were Bombay, Madras, Calcutta, 1857, the Education Act. And you know that the trajectory of British Raj. So we cannot forget that past. हमारा एक पूरा भारत की जो एक विशेषता थी, भारत का एक स्वाभिमान था, वो ख़त्म कर दिया। अभी लीडर्स के लिए, सभी लीडर्स, इंक्लूसिव टर्म में मैं लीडर्स ये उच्चारण कर रही हूँ, सभी लीडर्स को आवश्यक है कि भारत का गौरव, भारत का अभिमान, भारत का स्वाभिमान वापस लाना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम कुछ भी करें, हमें क्या करना है, नहीं करना है, ये शायद आज का चर्चा का विषय है। बिकॉज फ्यूचर से कॉन्फ्रेंस कनेक्ट की गई है और उसके लिए लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, एक्सपांशन, इक्विटी, एक्सेलेंस, बट इन व्हाट डायरेक्शन, वो हमें देखना है। टोटल यूनिवर्सिटीज बाय मैनेजमेंट, ये तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, आप उसको महसूस कर सकते हैं क्या क्या हुआ। एक छोटा सा मैंने इसमें प्रयास किया है कि जस्ट कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या हमारी ग्रोथ हुई इन क्वांटिटेटिवली। स्टूडेंट एनरोलमेंट कैसा बढ़ा, क्या हुआ, कम्युनिटी वाइज स्टूडेंट एनरोलमेंट कैसा रहा है। अनलॉकिंग द करंट एजुकेशन लैंडस्केप, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट यू नो ऑल कि what is going to happen in the next 10 years. We will be very strong in our demographic dividend, substantial increase of the working age population. This necessitates ensuring better productivity of the future entrants into the labor force. Countries like Singapore, South Korea have been adopting policies to empower the youth. Forward-looking policies exclusively meant for the younger generation is the need of the hour for India. एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी फॉर द यूथ, लास्ट जो है उसका भी सीक्वेंस इसीलिए रखा है। एम्प्लॉयबिलिटी फॉर द यूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी लीडरशिप का जो एक टेस्टिंग होने वाला है वो उस पर डिपेंड है। इफ़ वी आर नॉट अनेबल टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, हम लोग ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए हमें इस पैरामीटर को देखते हुए वी हैव टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ फोर्थकमिंग लीडर्स। Ensuring equitable quality higher education, universities are microcosms of the larger society, democratic spaces where every voice needs to be heard and respected. Building equitable higher education institutions, imperative, focused interventions for the disadvantaged group, what more needs to be done and how. Then increased governance reforms, very important. You could witness all the reforms taken place. The number of universities and colleges have increased manifold. Over-regulated system resulting in undue
slow processes, India's regulatory system based on the principles of institutional autonomy and accountability, expansion of private higher education institutes. There are many things. We have this, all of us have vision to become a developed nation, and economic growth, environmental sustainability, social progress, and good governance are the main pillars to become a developed nation. Realizing the vision of Vikasit Bharat 2047, focus on development that is all round, all pervasive and all inclusive. Then social justice as the approach, prioritize inclusive development and social welfare of all. These are the 4 pillars: transforming the curriculum for holistic development, skill development for employability, because these are the challenges. And through these initiatives, or if our focus is inclined towards bringing transformation, we need to have all these things: promoting entrepreneurship, research and innovation, promoting equitable education system. While evolution and adoption are constants, academic institutions must be resilient and inclusive. Very important point, the way forward. Because ultimately, after having a number of discussions and deliberations, we have to conclude something for our satisfaction. Individual is very important, because though the MGM is doing hard, doing all the activities, taking many initiatives, but ultimately what I wish to contribute for MGM is very important. Where I am, what I am going to contribute for my institution like NIPA. So everyone, they have to think about what would be the contribution from their side, from his side. Leadership is one of the most important factors in any institution's future. You have to visualize that where MGM will go. Then, needless to mention, leaders of HEI have a very challenging role done, several hats at the same time. Need to demonstrate the ability to work respectfully and effectively with a sizable diversity of people and viewpoint. As leaders, we should have high standards, a strong vision, creative and, although tough, always fair. This is all about the role which is given to us. And be a part of institute and having leadership, we should be mentally prepared to bring change in our personality, in our profession, in our role. It is all about the topic given to me. I thank Honorable Vice Chancellor Sir, who invited me for this special session, and I have no words to express my gratitude towards you, sir. Thank you very much. Questions from the audience, which I'm going to pass on to ma'am. We have about 10 to 12 minutes for Q&A, so we might not be able to answer all of them, but we will definitely, on the group that we have created, ma'am will respond to those. The question is, one of the big challenge in India is to bring in civic sense in people. People, when they are in public spaces, don't exactly behave properly. For example, drive badly on roads, throw garbage, spirit anywhere, etc. Then can a strong topic be added in the education stream, so kids develop a strong sense of good behavior along with education? किसने भेजा ये question? Please introduce yourself. अच्छा, okay. Ravi, thank you very much. My request to you, Ravi, especially, you go through the books which are prepared for foundational stage, and you will be very happy to see the books. Because again, why I am telling this? Because since the beginning, we have to integrate all these values, all these things in the curriculum. And at the same time, ये ऐसा नहीं है ना कि एक दिन में पूरा चेंज होगा. अभी बच्चों को हम लोग जो बहुत पैम्परिंग करते हैं बच्चों का, वो कहीं तो भी ख़त्म करना पड़ेगा. पेरेंट्स तो है ही, बहुत सारे लोग पेरेंटिंग तो कर ही रहे घर में, तो ये चीज़ें आएगी धीरे धीरे. अभी देखिए, बहुत सारी एक कविता भी आप देखोगे,
एक छोटी सी राइम क्लास 1, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, आप किताब ज़रूर देखिए। और फिर मेरे को लगता है कि आप मुझे कभी फ़ोन भी कीजिए कि मैडम फाउंडेशनल स्टेज की किताब में ये नहीं दिख रहा। ये इसीलिए आज ये जो लीडरशिप की बात हो रही है, विजनिंग द फ्यूचर लीडरशिप, इसीलिए मैंने फाउंडेशनल स्टेज को कनेक्ट किया। जो बच्चे हमारे बाल वाटिका से आगे आएंगे उनको दे विल कम टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ल्ड अराउंड अस। अभी एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ाएंगे, उसमें ये सब चीज़ें आएगी कि कहाँ हमको पानी की बचत करना है, बिजली की बचत करना है, मछली को जल की रानी क्यों बोलते हैं, बाहर निकालो तो मर जाती है, ये क्यों बोलेंगे हम? ये नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी फिर से विजडम की बात आती है। हम बोलेंगे जल में फिर से डालो, जी जाएगी। तो ये जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट है, शर्मा सर मुझे करेक्ट भी करेंगे, CB शर्मा, कुछ मैं यदि ये करती हूँ तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से बिगिनिंग से, अर्ली चाइल्डहुड से ही वो ऊपर आएगा। तो ये होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, इसका एक निश्चित दिन तय नहीं है। पर ये फाउंडेशनल स्टेज लास्ट ईयर हुआ है इम्प्लीमेंट, तो अगले 12 साल में तो हमको बिल्कुल चित्र दिखेगा कि बच्चों में ये चीज़ आएगी। तो इसलिए बस पेशेंस रखिए। देन दूसरा है, मैडम, इफ एज ए टीचर आई वांट टू गिव सजेशंस फॉर framing of policies at national level, what can I do? Whose question is this? Haj. Okay. Please introduce yourself. पॉलिसी में सभी डॉक्यूमेंट जो आते हैं वो पब्लिक डोमेन में आते हैं, डिस्प्ले होते हैं वेबसाइट पे। और तब कुछ दिन के लिए जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी तो आपको पता होगा पहला ड्राफ्ट कितना बड़ा था, फिर दूसरा कम हुआ। पूरे डॉक्यूमेंट्स ये पब्लिक डोमेन में आते हैं, फीडबैक मांगा जाता है। तो उस वक्त आप ज़रूर, आपके इनका क्वेश्चन है कि पॉलिसीज़ में कुछ यदि करना है चेंजेस तो कैसे करें, तो आप सजेशंस दे सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है कुछ दिन के लिए, सीमित समय के लिए, मंत्रालय के वेबसाइट पे वो रहता है और उसमें हमको हमारा प्रत्याभरण या फीडबैक देना पड़ता है। तो उसके बाद आप देखिए, भारत के जो भी नागरिक है सबको ये बोलने की मुभा है, फ्रीडम है। और पर एक बात हमने ध्यान में रखना चाहिए कि सही समय पे हमने देना चाहिए। सब होने के बाद ये भी हम बोलेंगे ये गलत है तो कोई नहीं सुनेगा। वो सही समय पर आपको आपका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू। अच्छा, और है शायद? हाँ, हाई क्वेश्चंस है। ओके, हाँ, ठीक है। देयर नीड टू बी ए बोर्ड एग्ज़ाम फॉर 10th। ये पॉलिसी डिसीजन लेना मेरे हाथ में नहीं, इसलिए इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। स्किल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर्स, गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड एन एक्सेलेंट जॉब बाय चेंजिंग द NEP, बट दैट क्या है अबाउट द एजुकेटर्स, वी नीड ए लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड ट्रेनिंग फॉर द मेंबर्स टू एग्जीक्यूट। हो रहा है ये, इट इज़ इन द, देखिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हम लोग एक प्लेट्यू को जब व्हेन वी ब्रेक द प्लेट्यू तो पीपल दे से दैट द सक्सेस इज इन ओवरनाइट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। प्रयास करते 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 फिर वो एक दिन प्लेट्यू को तोड़ता है, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ ही इज सक्सेसफुल, एंड दैट इज़ राइट। तो हमको प्रयास करते रहना है, यश तो मिलने ही वाला है। हाउ द गुड लीडर एट हायर लेवल कैन क्या मेथड कैन पास ऑन टू द अदर कलीग्स, आई फैकल्टी मेंबर। हाउ द गुड लीडर एट हायर लेवल, यस, बहुत सारे हैं, उसको हम उनका अनुकरण करना चाहिए। और पहली तो बात यह है कि हमारी कमियां क्या है, खुद में क्या कमियां है, ये महसूस होना चाहिए, तो ही चेंज ला सकेंगे। फिर एक है, हाउ आर वी इनकॉर्पोरेटिंग रिसर्च इन स्कूल एजुकेशन दैट कैन बी, हो रहा है ये रिसर्च के भरोसे किताबों में चेंज आ रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, एक्टिविटी बेस्ड, जॉयफुल लर्निंग, होलिस्टिक अप्रोच, इसके बहुत सारे जो भी रिसर्च पेपर निकले, रिसर्च हुआ है, उसको देख के ही ये अनुमान लगाकर किताबों में बदलाव लाया है। असेसमेंट इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाउ टू क्या लिखा है, असेस डाइवर्स कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, व्हाट अप्रोचेस टीचर शुड अडॉप्ट, इसकी चिंता आप मत कीजिएगा।
जब आएगा तब पूरे तरीके से आएगा, बिल्कुल क्या बोलेंगे हम लोग, उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो सब आपको दी जाएगी, यानी बहुत अच्छे से होमवर्क करके टास्क करके आपको दिया जाएगा। तो मुझे लगता है आप अभी चिंता मत कीजिएगा।